Austin has a very different kind of energy. It is a city that feels active and alive, but at the same time, it knows how to slow down. And that is exactly what I felt sitting here at Lady Bird Lake. Right in the middle of the city, you get this beautiful space where the water, the breeze, and the skyline all come together in such a peaceful way. What I really like about this place is that it gives you a break from everything. People come here to walk, run, cycle, sit, think, or just enjoy the view. And even if you are new to the city, for a moment, it makes you feel connected to it. There is something very calming about watching the water move while the city stands quietly in the background. It reminds you that not every beautiful moment has to be loud. Some places leave an impression simply by giving you space to breathe. Lady Bird Lake feels like one of those places. Simple, open, peaceful, and full of life at the same time. And honestly, if you want to feel the heart of Austin in a calm way, this is one of the best places to just sit and take it all in. ईगल आता है ना यूं करके डाइव करता है यूं करके नहीं करता है आउल आता है वो भी मतलब कि ना घूमेगा ऐसे ये आता है ये फुल हाइट पे घूमता है जैसे ही थोड़ी तरफ में ये आ रहा है पानी के अंदर 4 सेकंड बाद फिर लेवल है प्रीमियर है ना और जब ये आ रहा होता है ना मतलब ये यूं हो जाता है फुल्ली हैवी आए यार बोट पे सर मैं कह रहा हूँ बहुत चले आए अपन चलते हैं बोट में और बड़ा मज़ा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है $15-7 घर लेके जाने होंगे इसीलिए दिए गए हैं यार फ़ोन कैमरा तो कितनी बात है सर आप कैसा रहा आपको उसको सीधा मेरी तरफ से करें मुझे खुजली हो रही है यहाँ पे आगे और बस ठीक है पार्क हमारा मॉडर्न पार्क ज़्यादा अच्छा इंप्रेस में बिल्कुल भी नहीं और आप प्लीज़ कैमरा वापस बोटिंग कराते हैं